See, these protesters are once again attacking the protest. Sir, media, sir, media. लगी लगी कैमरा पे है। Sir, you are attacking camera people also. एक second. Sir, media personnel are also being attacked. Sir, हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें क्यों मार रहे हैं? मारिए मारिए और मार लीजिए कैमरा को। So, in order to chase these protesters away, cops are attacking indiscriminately, and my camera person Shantanu Sinha has also been lathi charged by these protesters. However, he is not injured right now, but this is very unfair for these cops. They should identify that they should let media people do their job. We are merely reporting what's happening in Delhi, on the streets of Delhi, and they are targeting people indiscriminately. You can see these protesters have stopped the movement of vehicles. Long queues of cars, buses are on this road, as the angry protesters refuse to be dispersed. Meanwhile, angry scenes are unfolding on this Delhi Janpath Road. एग्जाम के लिए जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो कहाँ मांगा जा रहा है? उसको छोड़ के तो बाकी सारी चीजें हो रही है। आप सहमत हैं इस मांग से? लेकिन अगर एक बात तो मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन आपको नेचर ऑफ प्रोटेस्ट से प्रॉब्लम है? नेचर ऑफ प्रोटेस्ट से बिल्कुल प्रॉब्लम है। अच्छा, कैसे सर, आप बताइए थोड़ा इसके बारे में, हमें थोड़ा एक डिफरेंट व्यू भी मिले। अगर ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट का ही है तो स्टूडेंट जहाँ तक मेरा ख्याल है सब पढ़े लिखे हैं। इसको एक सिस्टमेटिक और स्ट्रेटेजिक रूप से नहीं होना चाहिए था। ये एक स्ट्रेटेजी बनती, उसके लिए एक प्लानिंग होती। एक पढ़ा लिखा इंसान किस तरीके से प्रोटेस्ट कर सकता है कि उसकी आवाज आगे तक जाए, और वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। पर यहाँ तो सब पार्टी का हिस्सा बन के बैठ गए। ये भी किसान आंदोलन की तरह हाईजैक हो गया। अच्छा, किसने किया हाईजैक? ये तो तुम्हें भी पता है। जब तुमने मेरे को ये पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट कभी किसी पार्टी का नहीं होता। प्रोटेस्ट हमेशा अभी नहीं पता बेटा। ठीक है, यहाँ मैं भी जहाँ तुम आज हो ना, मैं भी वहीं से आया हूँ। पार्टी बता रहे हैं यार, आपके बच्चे नहीं है यार। The scary scenes have unfolded on the streets of Delhi. This is the Janpath lane through which you can go to Jantar Mantar, and now the police has started firing tear gas shells. They are also trying to disperse crowd by resorting to lathi charge. You can see the crowd, the young people are running away. The cops are chasing them away. You can see those loud explosions there of the tear gas shells, and they are trying to disperse this crowd which has been gathering since morning. And now the cops seem to have, Delhi police seems to have planned to disperse the crowd at Jantar Mantar. Chaotic scenes have unfolded here. You can see these protesters covering their faces in order to avoid the impact of the tear gas that has been just fired, and it remains to be seen whether the protesters have been allowed to move towards Parliament. However, earlier a scuffle also broke out between protesters and Delhi police. Now you can see these young people out there on Delhi streets. What's happening, bhai? So we were sitting at the place where Sonam Wangchuk was sitting for 30 days, right? We were just sitting there normally. They're sitting there cross-legged, and they came and said, "Lathi charge me, women, little girls, little guys." It's like a tyranny. Is it a democracy? Is it a democracy? You're viewing the live destruction of democracy. Yeah. Okay. So you can see that this is really getting out of hand now. An all-out exchange of hostility seems to have begun. We will speak to a few more protesters to understand what exactly happened here. क्या हो रहा है? बच्चों बम फेंके जा रहे हैं, गैस छोड़ी जा रही है, आंखों में दर्द हो रहा है, शर्म नहीं इनको जरा सी बिल्कुल भी। आप लोगों को परमिशन मिली फिर पार्लियामेंट जाने की? क्या चीज? पार्लियामेंट जाने की परमिशन मिली? परमिशन नहीं मिली। So anger
is palpable, and we are seeing these protesters are outraging over Delhi police's actions. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.